Okay. So I guess in last classes we have done unit 1 where we talked about cards, and then we also talked about upgrade center. Previous कोई टॉपिक में कोई डाउट अभी तक? नहीं, मैंने ट्राई किया था। उसके बाद आई क्रिएटेड कार्ड्स एंड होम Okay. पेज दैट थीम। Yes. ये hiring new team. This was created यस, by you. यस। Oh. Okay. Yeah. This works. All right. Okay. So then today we have to start unit 2 basically, and unit 2 is your role-based permission. So what is role-based permission? Basically in SuccessFactors we have different players. Uh, First player will be your employees. Okay, these employees will be your client. The employees will be working for your client basically. So let's say there is a client ABC. तो उस client के जितने भी employees हैं, those will fall under this category. And then we have managers, we have HR, then HR admins, and then lastly APS. So basically, these all players will access SuccessFactors instance only. The only difference will be that they will have different access. So yeah, if I talk about access, then employees will have lowest level of access, and then consultant will have highest level of access. Okay. Why consultant have highest level of access? Because we are the ones who are going to configure the system. And why employee will have lowest level of access? Because in hierarchy, in any organization hierarchy, employee will be the lowest at the lowest level, right? They can only view the information. They might not be able to edit some of the information, but few information again we can provide them for editing, right? Like if they want to edit their home address, so uska access we can grant them, but we cannot grant them access to edit their compensation information. It's like So they ये can चीज see their personal information. They can edit that information like contact number, address, all those things. उसमें भी very limited things they can edit. मतलब personal information में भी, let's say if they want to edit their marital status, Mm-hmm. then once they save those changes, there should be approval from HR. तो मतलब इस तरीके से we can design system कि अगर उनको edit access दिया भी है, if they are changing anything, then first of all approval should go to HR, ताकि HR उस चीज को verify करे and then save that data in system. ठीक है? So we will see how those approval works in EC, but for now that's how we set up role based permission कि किसको कितना access मिलना चाहिए. Those all will be controlled. Anyhow, managers, HR admin भी employees होते हैं. तो basically इन लोगों को भी employee level का access मिलता है. Okay. ठीक है, इन लोगों को employee level का access मिलता है, but additional few access is also granted to them. इसीलिए थोड़े सा सुपीरियर हो जाते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय. जैसे मैनेजर को वी विल ग्रांट एम्प्लॉय एक्सेस जो एम्प्लॉयज को मिला है, बट वी विल ग्रांट देम एडिशनल एक्सेस लाइक दे कैन हायर समवन, दे कैन टर्मिनेट समवन. तो इन चीजों का एक्सेस वी ग्रांट टू मैनेजर्स. तो और एम्प्लॉयज को वो एक्सेस हम नहीं देंगे नॉर्मल एम्प्लॉयज. दैट इज व्हाई वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर दीज प्लेयर्स. इनको सेटअप करने के लिए इन सक्सेस फैक्टर वी यूज रोल बेस्ड परमिशन. Okay. ठीक है, किसको कितना एक्सेस मिलना चाहिए, वी कैन ओनली कंट्रोल दैट विद द हेल्प ऑफ रोल बेस्ड परमिशन. एंड रोल बेस्ड परमिशन इज नॉट ओनली पार्ट ऑफ ईसी. मतलब खाली ईसी में ही वी कैन नॉट कंट्रोल परमिशन, एवरी मॉड्यूल यूजेस दिस. सपोज आपको रिक्रूटिंग मैनेजमेंट रिक्रूटिंग मॉड्यूल का एक्सेस देना है किसी को, तो यू विल ग्रांट देम परमिशंस विद द हेल्प ऑफ रोल बेस्ड परमिशन. तब वो लोग रिक्रूटिंग का काम कर पाएंगे. आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कुछ काम असाइन करना है एचआर को या मैनेजर्स को, तो यू नीड टू ग्रांट देम परमिशन, देन ओनली दे कैन डू दैट. लेकिन ये परमिशन देगा कौन?
ईसी कंसल्टेंट देगा या पीएमजीएम कंसल्टेंट देगा। सो बेसिकली हर मॉड्यूल की आरबीपी उस मॉड्यूल का कंसल्टेंट ही देखता है। ठीक है, अगर Okay. आप ईसी कंसल्टेंट, यू विल लुक ओवर ईसी रिलेटेड परमिशंस। रिक्रूटिंग कंसल्टेंट है, ही विल लुक ओवर रिक्रूटिंग रिलेटेड परमिशन। ठीक है, बट एक्सेस करने की जो जगह है दैट इज सेम, दैट इज योर रोल बेस्ड परमिशन। ठीक है, Got it. now let's go into system and see how we implement this role based permission. So role based permission को implement करने के लिए it's a 3-step process. First of all, create a permission group. Then create a permission role, and then assign permission group to role. So these are the 3 steps. इनको follow करके we can configure role based permission. ठीक है, सबसे पहले क्रिएट परमिशन ग्रुप। तो अगर हमें परमिशन ग्रुप क्रिएट करना है तो कौन से एक्शन पे हम लोग जाएंगे? द एक्शन विच इज यूज टू क्रिएट परमिशन ग्रुप इज मैनेज परमिशन ग्रुप। ठीक है, तो सिस्टम में चलते हैं, हम देखते हैं कि हम ग्रुप्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं। लेट्स गो टू, वी कैन सर्च फ्रॉम हियर मैनेज परमिशन ग्रुप्स। ठीक है, ये रहा मैनेज परमिशन ग्रुप्स। और अगर आपको सर्च नहीं करना है, यू कैन गो वाया एडमिन सेंटर एज वेल। एडमिन सेक्टर में जाके वी हैव दैट टूल्स सेक्शन, यहाँ पे सी ऑल करेंगे टूल्स में जाके, एंड यहाँ पे इफ यू स्क्रॉल डाउन तो परमिशंस को सेटअप करने के लिए देयर इज अ सेपरेट कैटेगरी बाय द नेम ऑफ सेट यूजर परमिशन। ठीक है, तो इन्हीं के एक्शंस को, जिसमें से मैनेज परमिशन ग्रुप इज वन ऑफ द एक्शन, इसको हम लोग यूज करेंगे। सो वी क्लिक ऑन इट, इट विल टेक अस टू फर्स्ट स्टेप विच इज मैनेज परमिशन ग्रुप, वेयर वी कैन क्रिएट न्यू ग्रुप्स। ठीक है, नाउ अब इसको थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस सिनेरियो से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से वी नीड टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ, वी नीड टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ ऑल स्पेन एचआर डिपार्टमेंट पीपल। इसमें हमें करना क्या है, वी नीड टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ स्पेन एचआर डिपार्टमेंट, यानी इस ग्रुप में आपके स्पेन के जितने भी एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इस ग्रुप में आपको ऐड करने हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, यू हैव टू क्रिएट अ ग्रुप। सो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू बटन पे क्लिक करो, एंड देन यहाँ पे हम ग्रुप का नेम देंगे, लेट्स से स्पेन एचआर। ठीक है, देन आप यहाँ पे देखोगे देयर इज समथिंग कॉल्ड पीपल पूल विच विल हैव डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स। ठीक है, ये ग्रुप आपको याद हो, वी हैव क्रिएटेड दिस इन आवर कार्ड क्रिएशन एज वेल। तो ये बिल्कुल वैसा ही ग्रुप है, सिमिलर, बट दिस विल बी स्पेसिफिक टू योर रोल बेस्ड परमिशन ओनली। दिस विल that card group will not show here. Okay, Okay. यहाँ पे we have this people pool where we can select a filter. Now हम लोग को जो filter select करना है that will be your based on job information company country. तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें ग्रुप बनाना है स्पेन के एचआर डिपार्टमेंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सर्च फॉर दोज एम्प्लॉय हु बिलोंग टू स्पेन कंट्री इन दिस सिस्टम। सपोज इस सिस्टम में 5,000 एम्प्लॉयज है, उनमें से स्पेन कंट्री को कौन बिलोंग करते हैं, सबसे पहले वी हैव टू फिल्टर दोस। फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज जॉब इंफॉर्मेशन कंपनी कंट्री, यानी उन एम्प्लॉयज की जॉब इंफॉर्मेशन में जो कंपनी है उसकी जो कंट्री है, इफ दैट इज स्पेन, एंड देन क्लिक डन, एंड देन क्लिक अपडेट। So here we have the option of update. Once you click on it, it will show 6 employees. तो यहाँ पे as per this filter, it shows that for
So for Spain, in this system, we have only 6 employees who belongs to Spain company. ठीक है? Now, अब इनमें से if I click this, इनमें से किसी एम्प्लॉय का डेटा करप्ट होगा, आई गेस दैट्स व्हाई इट इज थ्रोइंग एरर. मैंने अभी डन करके आई हैव सेव्ड दैट ग्रुप एंड आई विल रिफ्रेश. उनमें से किसी एक एम्प्लॉय का डेटा करप्ट है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अलाउइंग मी टू सी दो 6 एम्प्लॉयज कि कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं वो, और वो यहाँ पे एरर में दिखाएगा भी नहीं. Okay, then let's take another country as an example. Germany. Take subjective employees and then okay. So we have switched our scenario to Germany basically क्योंकि अब वो कौन सा employee that only SAP can tell. उसके लिए we need to create a SAP ticket and then wait for them, but then this is a demo environment, so they will not even respond. So okay, for Germany HR department, I have filtered based on country. So इस system में out of let's say 1,000, there are 136 employees who belongs to Germany. If I click on this 136, दूसरा तरीका है. If I go to org chart, so we have a directory in org chart where we can search employees. You can go to org chart and then directory. सर्च कर सकते हैं एम्प्लॉयज को बेस्ड ऑन फिल्टर्स. जो हमारा नॉर्मल सर्च बार है उसमें हम फिल्टर नहीं लगा सकते यहाँ पे, बट हियर इन डायरेक्टली वी कैन अप्लाई सम एडिशनल सर्च. और इसमें से इफ आई वांट टू सर्च बाय लोकेशन, यहाँ पे वी कैन सर्च बाय लोकेशन. बर्लिन, जर्मनी. So these are all your employees who belongs to बर्लिन लोकेशन. तो इसमें से क्या है, बेसिकली आपके जर्मनी के भी एम्प्लॉयज है. ठीक है. तो अब ये क्या है कि जो 136 एम्प्लॉयज हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज ऑल बिलोंग्स टू जर्मनी कंट्री. बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जर्मनी एम्प्लॉय के साथ साथ इन जर्मनी एम्प्लॉय में से जो एचआर डिपार्टमेंट में हो स्पेसिफिकली, वही केवल इस ग्रुप में ऐड होने चाहिए. अभी तो हमने सारे जर्मनी के ऐड कर दिए, बट नाउ we have to again click on this add another category and then again select a filter based on department. तो आप यहाँ पे जॉब इन्फॉर्मेशन में सर्च करोगे, यू विल सी दिस डिपार्टमेंट. यहाँ पे एक और फिल्टर है डिपार्टमेंट नेम, दोनों ही आप यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. तो लेट्स से इफ आई सेलेक्ट डिपार्टमेंट एंड देन यहाँ पे इफ आई ट्राई टू सर्च बाय एचआर, तो यहाँ पे एचआर बिजनेस ऑफिस डीई व्हिच स्टैंड्स फॉर जर्मनी. एक ये है, एक ये है. इनमें से आप यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दीज, और दोनों को भी सेलेक्ट कर सकते हो, नो इश्यूज. आई सेलेक्ट दिस एंड देन डन एंड देन अपडेट. 7 employees. So basically, there are 7 employees in the system who belongs to Germany country and their department is HR business office. ठीक है. I can add more. मतलब अभी हमने 2 ऑप्शन देखे थे. You can go to add another. Again, search here for HR. This time we can select the other one, which is this, and done and update. So 13 हो गए. So basically add हो गए हो, right? क्योंकि हमने ये दोनों डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए. So you see we have 13 employees. Yeah. Sorry, Mohit. So these drop down list will all it will be inbuilt in SuccessFactors, or how we are going to import the data? So these are standard filters which are available in SuccessFactors. Okay. But we can configure custom field. So let's say we have configured any custom field and we want to use that field as a filter. We can do that as well. Okay. Okay. So let's say you configure a field in job information section or personal information section, and you think you want to use this in permission group as well as part of a filter.
yes, we can do that. We can add that filter. So we'll see how we do that. Okay. Yeah. So as of now, 13 people are added, 13 employees are added in this group, and then click done. And that's how we create permission groups. So Germany HR department is created. So basically permission group is collection of individual employees. That's it. And based on filter, we have to drive that particular group. आपको जो filters available है, you have to use that and then configure as per requirement. You have to configure that. Now, let's say the client कह रहा है कि okay, 13 employees are fine, but they want to add couple of more employees who doesn't fit any criteria at all. मतलब इनमें से कोई भी criteria meet ही नहीं कर रहा है. Then in that, you can add user directly to this group as well. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Add another people pool. Select a filter by the name of user. So a filter by the name of user, and then you can type their name manually so that you can add them to this. Okay. Suppose I want to add Mike Moore, done, and then update. It became 14. Now we have 14 people in this group. Okay, so that's the flexibility which we have in order to create permission. Okay, let's say we want to exclude someone from out of these 14. With these two filters, we got 13 employees, and you want to exclude someone, any specific employee. You can use this exclude these people from group feature as well. Again, what you need to do, select a user filter, and whichever user you want to exclude, just enter their name and done, and they will get excluded from it. Okay, so we have this. So basically, जितने भी options हैं, we have to use, and इन्हीं को use करके we have to configure a permission group as per requirement. ठीक है? So now we have configured this Germany HR department. Click done, and that's how permission groups are created. Now, by default, whichever permission groups we configure, those are dynamic in nature. What do we mean by dynamic? Dynamic means, let's say, अगर आप अभी किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो, अभी मतलब अभी तक वो सिस्टम में हायर नहीं हुआ, एंड नाउ इफ यू हायर समवन विथ country as Germany and department as any one of these, that particular person will get automatically added into this group because वो ये criteria meet करता है. ठीक है? This is called dynamic permission. ठीक है? So if you hire someone today or in future, and that particular employee meets this criteria, that person will automatically get added into this. So dynamic permission group की help से your manual maintenance is basically zero. You don't have to come here and add a person or update this. No, it will get automatically added. As per the job title and other person details, if it will be matched under this HR business. Correct. जब हम एम्प्लॉय को हायर करते टाइम वी एंटर्स इंफॉर्मेशन, राइट? तो अगर उसकी कंट्री जर्मनी एंड देन डिपार्टमेंट इज एनी वन ऑफ दीज, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा. वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग. ओके. इसका रिवर्स भी अप्लाई करता है. रिवर्स इन द सेंस, अगर आप अभी किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करते हो, इन 14 में से किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करते हो जिसकी जो कंट्री ये है और डिपार्टमेंट इन दोनों में से, दैट पर्सन विल ऑटोमेटिकली दिस ग्रुप एज वेल. ठीक है? दैट्स व्हाई these are called dynamic permission. What you said, Mohit, your voice was breaking up termination time. Yeah, I was saying that इसका reverse is also applicable. The reverse means if you terminate someone जिसकी country Germany है and department is any one of these, that person will get automatically removed from this. Okay. So हमें manually you don't have to remove. Okay. That is why dynamic groups सबसे ज़्यादा use होते हैं because of reduced manual maintenance. There is no manual maintenance basically. Now, apart from this, there is one more type of permission group which is used, that is static. Now, what is static? Static basically doesn't have any
filter conditions. Like in dynamic, we have these filter conditions, but in static, there isn't any. In static, you can only add users manually and you can remove users manually. Both tasks are manual. Okay. Now let's see how static groups are created. So in order to create a static group, you have to click import static group button here. Then click on download a blank CSV template. And then automatically a blank CSV will be downloaded. Open this CSV. And then there is a format which we have to use in order to create static group. So I will just remove the second row from that format. And here it asks us to provide group name, user ID, and assignment ID. User ID and assignment ID in दोनों में से you can fill any of the column. So let's say I want to create a static group by the name of Germany HR Advice. Just to notify, I'll just add that in front of it. So I want to create this permission group as a static. And in order to add users in this, you need to provide user ID of those employees. So let's say I want to enter you in this group. So I know your user ID is this. But let's say I want to add a few more people in this. I need to get those people's user ID. And how will you get the user ID? You can search it. If you want to search any person's user ID, you can just go to their profile. And then under biographical information, you will get that user ID. To add my biographical information, and this is the user ID. I need to just copy this and then okay. Now in this group, these two people will be added. This is how we have to do it. Okay. I have added 3 people in this group. And we have to maintain it like this. जितने भी users को हम लोग ऐड करेंगे उनके front में we have to mention the group name as well. Okay. So this is the format of creating a static group and save your file. You can enter as many as you want. Okay. There is no limit on it. Save the file, and once we save it, we have to import it back in SuccessFactors. We'll go to System, and then here in Import Static Group, click Choose File, and under Downloads, this is the file which we just added, Static Group Full Replace. Select this. Once we select this, it says 2 options for import. One is Full Replace, other is Delta. What is the difference between Full Replace and Delta is? The full replace is if that group already exists in system, then replace all the users from that group and put the new users which we have entered in this Excel. Okay. So basically, अगर एक group है, जो users है उनको हटाओ और ये नए वाले ऐड करो. That is your full replace. लेकिन if you use delta and if that group already exists, then keep the previous users and add these new ones. That is called delta. Okay. But we are doing this for first time. This group doesn't exist at all. So we can use full replace. Okay. Can use full replace and then click file. So this validate file is just to check if there is any error or not. If not, then again choose the file. But this time click upload. Okay. And then it will take a couple of minutes. Backend processing will be done. And then your static group will reflect. Okay, so we'll just cancel this, refresh the page. And here we can see static. How many users we added in this? 3 users. And these are the users. And from which location you imported this Excel sheet? Import static group. Okay. Neeraj, I have a parcel coming up from Amazon. Can you hold on for 5 minutes? Sure.
काम करते हैं, ये सेशन एंड होने वाला है 5 मिनट्स में। लेट्स ज्वाइन बैक इन 10 मिनट्स। ठीक है, हेलो। Shall I stop this recording? हाँ, या जस्ट स्टॉप। Okay, Yeah, just join back in 10 minutes, okay? okay, sure. Thank you.